हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ओके, सो आकाश सेज प्लीज एक्सप्लेन DHA 5। ठीक है, सो आई विल एक्सप्लेन DHA 5 एज वेल। ठीक है, एंड टुडे वी आर एक्चुअली गोइंग लिटिल फर्दर फ्रॉम प्रीवियस डेज टॉपिक। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम लॉसेस को पढ़ा था, एंड लॉसेस में मैंने आपको कोसाइन सिमिलरिटी वाला लॉस दे दिया था कि यू हैव टू एक्चुअली सी कि आपके जो फॉर्मूले उसमें दे रखे थे उसके डॉक्यूमेंटेशन में, वो आपका राइट रिजल्ट्स लेके आते हैं या नहीं लेके आते हैं। सो इट वाज जस्ट टू गिव यू अ फीलिंग कि आप जो भी कोड लिख रहे हैं वो एक्चुअली पहले हैंड कैलकुलेशन करके या फिर कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले ड्राइव करके निकाला गया होगा। इट वॉज नॉट जस्ट बाय गॉड्स ग्रेस ऐसे ही आ गया। ठीक है, सो इट वॉज जस्ट टू गिव यू अ फीलिंग ऑफ दैट। ओके, यस, सो इट कुड बी पॉसिबल कि आपका डॉक्यूमेंटेशन में फॉर्मूला अलग अलग हो विच यू कुड हैव एक्चुअली वेरीफाइड. So let me actually show you how you could have verified this. Okay, so if you go to this keras.io, then you might actually be able to see okay, so यहाँ पे we just have to actually see for okay, यहाँ पर सर्च बॉक्स होगा, say we want cosine similarity, right? Cosine similarity. ठीक है, okay, so we got something. So losses में चलते हैं, and then over here you will get your cosine similarity function. ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी. दिस डॉक्यूमेंटेशन विल नेवर लाई टू यू. तो यहाँ पर जो दे रखा है आप वहाँ से कंफर्म कर सकते हो कि यही डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है. ठीक है, सो यू कुड हैव एक्चुअली ठीक है, कंफर्म कर सकते थे आप लोग यहाँ पे. ठीक है, so yes, so there is something that I want to tell you, like most of the students have done stupidity in their DHAs. like कुछ ने ऐसे DHA करके दे रखा है कि I was like for 5 or 6 minutes confused कि मैंने ये क्या पढ़ा दिया. ठीक है, सो प्लीज़ डोंट सर्च ऑन द इंटरनेट कि आपको DHA कैसे करना है. यू जस्ट हैव टू डू व्हाट इज़ बीइंग टोल्ड इन द क्लास. ठीक है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. जो क्लास में बताया जा रहा है बस वही आपसे DHA में पूछा जा रहा है. वहाँ आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप इंटरनेट पे जाओ और जो वो लोग करके दे रहे हैं वैसा करो. ठीक है, ओके, यू जस्ट हैव टू एक्चुअली डू दिस. जैसे अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, लेट मी एक्चुअली इंपोर्ट एवरीथिंग. इंपोर्ट टेंसर फ्लो STF and from TensorFlow import Keras, and let's import NumPy as well, NumPy as NP. ठीक है, so what you had to actually do was आपको keras.losses.cosine, it was cosine similarity, इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाना था, which I had actually told you कि आप कैसे इस डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे आप. एंड यहाँ पर आपको ऑलरेडी ये फॉर्मूले दे रखे थे, आपको बस करना ये था कि जो ये फॉर्मूले दे रखे हैं इन्हें आप लेके आते, एंड देन यहाँ पर जैसे मैंने कल आपको कैलकुलेशन करके बताया था वैसे करना था. ठीक है, दैट्स ऑल. ठीक है, यू जस्ट हैव टू डू इन दैट वे. एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना था, यहाँ से जो भी आप कैलकुलेशन करते, सॉरी ऐसे नहीं, पहले आप इसका ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करोगे, लाइक से CS करके. सो देन यू विल एक्चुअली पास ट्रू वैल्यू यहाँ पर. सो y ट्रू, समथिंग लाइक दिस, y ट्रू, एंड देन y
प्रोडक्टेड, ठीक है, ऐसे करके आपको करना था। एंड जो भी आंसर आपका आता से नमपाई और भी करना था आपको। इससे करने के बाद जो भी आपका आंसर आता, ठीक है, उसको आपको कंपेयर करना था। जो आप अगर हैंड रिटन कैलकुलेशन करते या फिर आप यहीं पर क्या करते, जो फॉर्मूले आपने देखे वहाँ पर से वाई ट्रू के लिए जो कुछ भी दे रखा है, सो यू कैलकुलेट द वाई ट्रू वैल्यू लाइक दिस। एंड देन जो भी फॉर्मूले दे रखे हैं यू हैव टू एक्चुअली डू इट इन द नोटबुक इटसेल्फ, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप अलग से करते भी हैं, ठीक है, अलग से आप करते भी हैं, देन आप क्या कर सकते थे, अपनी नोटबुक फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करते एंड देन पीडीएफ फाइल में ये आगे का मर्ज कर लेते जो भी आपने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए हैं, ठीक है। Okay, so cosine underscore similarity and cosine similarity had different. All right, let's see what was the error then. Okay, so we can actually check for it. Yes, so yes, that would be interesting to find out क्या difference है इन दोनों में, ठीक है। So let's see if there is any difference actually, ठीक है। If you found any difference, then I must also find any difference here as well, ठीक है। So यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। So let us just open it in another tab. Okay, so this is our loss over here, and now let's see what you are actually talking about. Keras dot losses dot cosine similarity. Okay, so I actually gave you this one, ठीक है। मैंने आपको ये वाला फंक्शन दिया था करने को। I actually didn't even go on this one, okay, इस वाले पे मैं गया ही नहीं था, ठीक है। सो वी कैन एक्चुअली सी द डॉक्यूमेंटेशन एज वेल, इसे पता चल जाएगा। labels and predictions, okay, yeah. So the thing is this documentation looks incomplete. They haven't actually, oh, okay, so yes, so this is pretty straightforward, like minus sum and this thing. और यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है that says you have to do, yes, so your loss will be cosine loss, हाँ, okay, so this will be your loss over here. Yes, so it is quite confusing, ठीक है। so I'm not saying कि ये confusing नहीं, but still yes, so I didn't actually know कि इसमें cosine similarity करके एक और loss function होगा। I actually wanted you to do everything with this one, ठीक है, with this one cosine similarity. Okay, so why are we using cosine similarity? Yes, so that should be the question, ठीक है। So cosine similarity is a regression loss function। जैसे आपका मीन स्क्वायर्ड एरर है, वैसा ही cosine similarity आपका regression problems के लिए loss function है। So over here you can actually see about cosine similarity transform, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके। तो जैसे हम लोग रिग्रेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, उसी तरह से हम लोग इस कोसाइन सिमिलरिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, ठीक है। सो यस, यस, सो कल थोड़ा सा रह गया था आई थिंक,
आई एक्चुअली वांटेड यू टू सी कि हम लोग कैसे अपने खुद के लॉस फंक्शंस बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक और लॉस फंक्शन को डिस्कस करूँगा, एंड दैट विल बी मीन स्क्वायर्ड एरर, नॉट मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर तो हमने कर लिया था, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, आई थिंक इट हैज़ टू बी इन द डॉक्यूमेंटेशन, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, keras dot losses dot maes, so mean absolute error. So they haven't actually provided any useful documentation over, because I think they kind of want you to know कि आपको बस y true में से y प्रोडक्ट घटाना है एंड देन उनका एवरेज ले लेना है। सो वी कैन एक्चुअली सी क्या वैल्यू निकल के आती है यहाँ से। we have also seen it with our metric as well। ठीक है, हम metric में भी देखा था, MAE आपका एक metric भी होता है। so 0 0 0 and let's see what does it say। so it says 1। ठीक है, तो 1 it is pretty simple, यहाँ से आप देख ही सकते हो, but now why is it saying 0? Yes, sometimes this really surprises me, like now it is starting to say 0 0 0 why? ठीक है, कोई बात नहीं, let's kind of do it again। losses dot MAE 1 comma 1 comma 1 0 and then 0.1 0.9 and 0.9 say 9 and 0। let's see what will it say now। ठीक, oops, I made a mistake। okay, so it is telling us that it is 0.275। तो यहाँ से आप एक्चुअली चेक कर सकते हो, so यहाँ से करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को आप घटाते चले जाओगे। ठीक है, सो लेट मी एक्चुअली रिमाइंड यू हम लोगों ने क्या क्या किया था लास्ट टाइम। सो आप ये वाली वैल्यू लोगे लाइक दिस वन, ठीक है, एंड इसको इससे घटाओगे एंड देन ऐसे ही आपका चलता रहेगा ये सब। ठीक है, सो आपस में घटाओगे तो मैंने आपको बताया था मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, योर y ट्रू वैल्यू माइनस योर y प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, एंड इसका आप क्या ले लोगे, एब्सोल्यूट ले लोगे। एब्सोल्यूट मतलब नॉर्म ले लोगे आप, लाइक वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट्स वैल्यू नॉट द साइन, सो इट इज़ अनसाइंड, इट इज़ अनसाइंड। ठीक है, सो दिस विल बी योर मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट ओवर हियर, जैसे 1 माइनस 0.1, ठीक है, प्लस 1 माइनस 0.9। वैसे मुझे ये करना नहीं चाहिए बिकॉज दिस इज़ सो सिंपल एंड यू कैन एक्चुअली डू इट, बट लेट्स डू इट। डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आ जाएगा, 0.9 plus 0.1 plus 0.1 divided by 4, and this should give you this number. This will be 1.1 divided by 4, and then this will be 0.275। this has to be this value। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, सो you can actually do it with, ठीक है, सो नाउ लेट मी एक्चुअली टेल यू कि आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, अपने खुद का लॉस फंक्शन ही बना सकते हो। तो फॉर मेकिंग योर ओन लॉस फंक्शंस व्हाट यू विल रिक्वायर इज, यू विल रिक्वायर अ कॉलेबल। तो कॉलेबल क्या होते हैं, कॉलेबल आर नथिंग बट योर फंक्शंस। तो आप अपना फंक्शंस यूज़ करके अपना खुद का लॉस फंक्शन बना सकते हो। सो लॉस फंक्शन बनाने के लिए कुछ नहीं करना आपको, से
let us just, I'll just make my own loss function. So it will take y true value, the ground truth, and y predicted value, and then what it will do is it will it will actually return your y true absolute of y true minus your y predicted value, ठीक है. So this could be a loss function, ठीक है. अब इसे कैसे हमें करना है कि कंफर्म कैसे करना है कि अगर ये लॉस फंक्शन है या नहीं है, तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है. यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ न्यूरल नेटवर्क. Gunjan, I didn't actually understand your point, what you are trying to say. Y predict में points m value क्यों ले रहे हैं? I didn't actually understand that what you're trying to say. ठीक है. So now let's actually move forward. Okay, so points, okay. So points में value हम ले सकते हैं because this could be a regression problem, ठीक है, या फिर अगर classification problem भी है then this could be your like predicted value. So it could be 90% मैच कर रहा है आपका, ठीक है. So you get the idea कि ये prediction value है, that is why. So now let us just try to create a neural network. तो neural network create करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, we'll actually आगे से हम लोग तो neural network बना सकते हैं. एक सिंपल सा model equals okay keras dot sequential Okay, good evening, Neelam. You are very late to the class. Model dot add Keras. Okay, Keras dot, all right, spelling mistakes. Keras dot layers dot what? Dense, yes, dense. ठीक है. सो लेट्स जस्ट ट्राई टू क्रिएट वन न्यूरॉन, ठीक है. तो और इसका एक्टिवेशन क्या होगा, इसका एक्टिवेशन लेट्स टेक वैल्यू. ठीक है. सो आफ्टर एक्टिवेशन यू कैन डिफाइन द इनपुट शेप. सो लेट अस जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस एंड प्रॉब्लम जो हम लोगों ने बहुत पहले सॉल्व की है, तो सही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो इनपुट शेप विल बी 2, ठीक है. एंड नाउ मॉडल डॉट कंपाइल optimizer will be your sgd keras dot optimizers dot sgd, ठीक है, with learning rate of 0.1. let us just take 0.1, ठीक है. अब आता है आपका लॉस, ठीक है. एंड देन द लॉस विल बी जो हम लोगों ने अभी बनाया है. सो द लॉस विल बी माई लॉस फंक्शन, ठीक है. एंड देन योर मेट्रिक विल बी, अब कौन बताएगा मुझे यहाँ मेट्रिक क्या होगा. अब हम लोग मेट्रिक कवर कर चुके हैं, तो अब कौन बताएगा यहाँ पर मेट्रिक हमें क्या लेना चाहिए. Okay, so Akash says the MAE. Okay, any more answers? And okay, so let me actually tell you, हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं.
we are actually trying to solve a very old problem. Metric for end classification. So this is the problem. We are trying to solve end problem. तो हम लोग यहाँ पर एक्चुअली अभी डेटा डिफाइन करेंगे. सो दिस टेबल विल बी डिफाइंड. अभी डिफाइन नहीं किए बट वी विल एक्चुअली डिफाइन इट. ठीक है, ये अभी टेबल डिफाइन होगी. सो यू हैव टू एक्चुअली टेल मी कि कौन सा मैट्रिक यहाँ पे इस्तेमाल करना है. Yes, Sachin, you can actually use binary cross entropy over here. Yes, so Kirti, that is absolutely right. You can use accuracy. अब इनके अलावा भी हम लोग कुछ मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं. अब मुझे कौन बताएगा? एक्यूरेसी के अलावा भी एक और मैट्रिक है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे. हम लोगों ने लास्ट क्लास में उसे पढ़ा हुआ है. Okay, so let me actually tell you. So the metric that you can use over here will be binary accuracy. ठीक है, आप बाइनरी एक्यूरेसी भी इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, बट बाइनरी एक्यूरेसी यहाँ कहीं एरर ना दे दे. लेट्स सी, एरर नहीं देती. सो यू कैन एक्चुअली यूज़ बाइनरी एक्यूरेसी, या एक्यूरेसी यूज़ कर सकते हो, या बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी भी यूज़ कर सकते हो. बिकॉज यू कैन यूज़ एक्चुअली यू कैन यूज़ एनीथिंग ओवर हेयर, क्योंकि मैट्रिक में हम लोग जो भी डालते हैं इट एक्चुअली डजेंट इफेक्ट योर न्यूरल नेटवर्क, बिकॉज न्यूरल नेटवर्क का जो भी अपडेशन है वो इज़ एक्चुअली गवर्न्ड बाय दिस लॉस फंक्शन. ठीक है. ओके, सो वी हैव एक्चुअली डन दिस पार्ट. तो नाउ अब हम लोग अपना डेटा बनाते हैं. सो डेटा विल बी योर np डॉट एज अरे ज़ीरो कॉमा ज़ीरो. Okay, so okay, 0 comma 1 and then 1 comma 0 and then 1 comma 1. ठीक है. And now let's give it a proper format. ठीक है. So ये हो गया आपका डेटा, या फिर इसे x बोल देते हैं हम लोग. Let's call it capital X. ठीक है. अब आपके लेबल आएंगे. सो लेबल विल बी np डॉट एज array. So I'll actually call it 0 0 0 1 and then I'll transpose them. ठीक है. So this will be your data. So y आपका कुछ ऐसा दिखेगा and x आपका कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है. So now we have built our network, we have built our compiler network, and now let's just try to see कि क्या आपका नेटवर्क काम कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है. So model dot fit. So we have to fit what? We have to fit x with y, and the number of epochs that we want is say n.
not 10, let's go ahead with 50. Okay, and the batch size, let's take it to be 4. Okay, so now starting में error आ गई. Let's see why we are getting the error. All right, let's see. Okay, so over here it says, yep, so it says input y of sub op has type float 32 that does not match type int 64 of the argument x. Nice. Now in which line are we getting this? Yes, so we are actually getting it over here. हमारा जो oh, okay. No, 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 no. That is not how it will be done, Achint. So this is the error that we have generated because of our code. ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने कोड लिखा है, it is because of this code. ठीक है, input y of sub op has type float 32 that does not match the type int 64 of argument x. Okay, okay, so we can actually check it कि आपका क्या क्या टाइप है इनके. So x dot d type, and it says int 64, and your y dot d type, and it says int 64. So int 64, that is fine. And what I think is जो आपका न्यूरल नेटवर्क प्रोड्यूस कर रहा है, those values are float 64. तो आपको ये वाली वैल्यूज को इनमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. So you are actually right if we have to convert them like this. Okay, and now let's see if y kind of gets float 64. Yes, so now it is float 64. So let's just, okay, now let's see if it works. And still again we are getting another error, and this is pretty good. We are moving forward. Okay, creating variables on a non-first call to a function decorated with tf dot function. Yes, so yes, so please remember that I have made a terrible mistake over here, because जो मैं यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ, this is actually not possible. इसके लिए आपको TensorFlow के जो methods हैं आपको वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे. So first of all, let me actually give you those TensorFlow methods. So सबसे पहले आपका जो केरास की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ पर अगर आप लॉसेस में जाओगे ना, then you will actually see यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूजेस विद लॉसेस ऑफ दिस एंड देन आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कैसे आप अपने खुद के लॉस बना सकते हो. सो क्रिएटिंग कस्टम लॉसेस में आप जाओगे, देन यू विल सी कि जब आपको इनका डिफरेंस निकालना है तो आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंस निकालोगे. ऑलराइट, एज यू कैन सी ओवर हियर, tf dot reduce means something like this. In this format you will have to actually calculate this. Okay, no Kirti, we cannot use categorical accuracy because we are dealing with only a 2 class problem over here. Okay, so you wouldn't want to use categorical accuracy. ठीक है, सो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, सो आपको कुछ इस फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा. सो tf इज़ योर TensorFlow. तो TensorFlow में लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड एनीथिंग इम्पॉर्टेंट ओवर हियर. सो लेट्स सी. So it will not be absolute first of all. So tf dot, let's see, tf dot, is it recognizing? Yes, so now over here you can actually see this dot is completely difference. It has to be difference, divide, not divide, subtract, yes, subtract y true,
minus y predict. All right, now it will give you what we call as it will give you a negative, it may give you a negative value. So what you would want is you would want something like tf dot absolute, I think, yes, absolute. ठीक है, so now let's try to rerun this code and let's see if it works. तो आपको कंपाइल भी दोबारा करना पड़ेगा बिकॉज आपका जो my loss function it has changed actually. ठीक है, so दोबारा कंपाइल करते हैं and then actually you can see कि यहाँ पर फिर से एरर आ गया and this error says subtract missing one required positional argument y. All right, yes, so this has to be something like this. ठीक है, let's see now, let's see. Yes, so now it has been compiled properly and let's see if we can train a neural network. So now it works fine. ठीक है, so as you can see a binary accuracy is your 1, that means you are actually producing 100% जो भी आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो दैट इज 100%. नो, नॉट एग्जैक्टली अचिंत. आपके जो लॉस फंक्शंस हैं इससे लिमिटेड नहीं रहते बिकॉज आपको जो टेंसर फ्लो लाइब्रेरी है इट हैज़ प्रोवाइडेड यू अ लॉट ऑफ फंक्शंस. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ सो से tf डॉट, यहाँ पर देखो जितने भी आपके मैथमेटिक्स वाले फंक्शंस होते हैं सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं. ठीक है, एज यू कैन सी ओवर हियर. Okay, so you can actually use any of these functions. ठीक है, आप कोई सा भी फंक्शन इसमें से इस्तेमाल कर सकते हो फॉर डूइंग योर कैलकुलेशंस. ठीक है, तो यहाँ पर कोई लिमिट वाली बात नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, एंड क्रिएटिंग योर ओन कस्टम फंक्शंस इज लाइक yes, so the only limitation that you will ever see with this thing will be to yes, so the math function has to be the TensorFlow function जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जिस फॉर्मेट में आपको डेटा डालना है और जो आउटपुट निकल के आएगा दैट हैज़ टू बी द सेम. ठीक है, बाय सेइंग दैट आई मीन जो आपका TensorFlow से आउटपुट आ रहा है, ठीक है, वो आउटपुट हैज़ टू बी सेम एज सॉरी जो आपका कस्टम आप जो फंक्शन बना के निकालोगे. ठीक है, तो जो उसका आउटपुट आना चाहिए दैट हैज़ टू बी सेम इन द सेम फॉर्मेट एज योर TensorFlow. जो TensorFlow से आउटपुट आता है जो मैथ ऑपरेशंस करने के बाद. ठीक है, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू विल एवर सी कि इसमें इतना लिमिटेशन लग रहा है हमें बस. ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस फंक्शन का थोड़ी सी छेड़छाड़ भी कर सकते हैं एंड वी कैन एक्चुअली काइंड ऑफ चेंज इट इन एनी वे एक्चुअली. ठीक है, उसके बाद यू विल सी कि येस इट इज़ प्रीटी ऑसम टू क्रिएट योर ओन लॉस फंक्शंस. ठीक है, जैसे सो another question will be why will you will ever require your own loss function जबकि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं. ठीक है, सो सी द मेन रीज़न यू विल एवर रिक्वायर योर ओन लॉस फंक्शंस इट विल एक्चुअली डिपेंड अपॉन योर प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व. ठीक है, सो योर प्रॉब्लम मे बी से लाइक वी काइंड ऑफ प्रेडिक्टेड द स्टॉक मार्केट प्राइजेस. तो उसमें क्या हो रहा था, से योर इन्वेस्टर जो आपको पैसे दे रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, से ही वांट्स कि आप थोड़ा सा भी लॉस नहीं झेल सकता वो. ठीक है, तो आपको थोड़ा सा भी लॉस नहीं करना. Yes, so please Chin, see this TensorFlow is the library that is working in the background of Keras. ठीक है, तो Keras में जो बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है तो दिस कमांड लाइन लाइक ओवर हियर. ठीक है, इफ़ यू सी ओवर हियर दिस थिंग. ठीक है, दिस थिंग इज़ एन API, जो कंपाइल API है ये. ठीक है, so this actually sends the information to the TensorFlow backend. So TensorFlow is actually working at the backend. Okay, so this loss function जो आप बनाया है आप लोग, ठीक है, so this loss function has to be at the same backend, like उसी backend में होना चाहिए. उसी backend में जो
प्रोसेसिंग हो रही है, दैट डेटा हैज़ टू बी इन द सेम फॉर्मेट लाइक ऑफ दैट बैकएंड। अदरवाइज अगर अलग तरीके से डेटा देगा देन दैट कुड हैव बीन द प्रॉब्लम, लाइक जैसे हम लोगों ने अभी देखा। सो टेंसर फ्लो में जो क्लासेस होती हैं, दोज क्लासेस आर लिटिल डिफरेंट, लाइक इट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड इन दिस वे कि यू कैन नॉट वर्क विद गोट्स हार्ट, ठीक है। सो दिस कुड बी अर गोट्स हार्ट एंड टेंसर फ्लो कुड बी अर ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन में आप गोट का हार्ट लगा दोगे देन ह्यूमन में नॉट परफॉर्म very well or will not actually perform. So same goes with the TensorFlow and its mathematical operation. Okay, so now let's try to move forward. Okay, so now let's yes, so we have covered this one. Yes, so I was telling you why we will ever require your loss function, a different loss function. Okay, so let's see how it is actually progressing. So यहाँ पर you can actually see कि आपका जो loss function है, loss function is kind of in this format. So it is producing 0.376 something, and then it is decreasing with every epoch. Okay. So you can actually see कि, or you can actually kind of plot this in plotly and you will actually see कैसे आपका loss decrease कर रहा है, ठीक है। So yes, so why you will ever require your own loss function? Yes, so the reason you will ever require will be to like solve your problem in a specific way, ठीक है। से जैसे मैंने भी स्टॉक मार्केट एग्जांपल दिया था, यू वर काइंड ऑफ प्रेडिक्टिंग द प्राइस ऑफ दैट। तो उसमें क्या हो सकता है, योर इन्वेस्टर दैट पर्सन गिविंग यू द मनी, सो यू मे वांट कि आप जो भी काम कर रहे हो वहाँ पर लॉस कम से कम हो, ठीक है। सो यू मे एक्चुअली काइंड ऑफ क्रिएट अ लॉस फंक्शन जो आपके न्यूरल नेटवर्क को हाई लॉस होने पर पनिश ज़्यादा करता हो, ठीक है। सो लाइक अगर आपका लॉस ज़्यादा हाई है देन आपका जो वेट अपडेट है वो इट कुड बी इन अ सर्टेन वे, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। दैट इज़ वाई वी विल एक्चुअली रिक्वायर आवर ओन लॉस फंक्शंस, ठीक है। सो द आंसर वुड बी टू okay, so let me actually write it over here because this is a pretty important point. Why require a custom loss function? So the answer will be to ठीक है, for solving specific problems, ठीक है। All right, so I think we are almost done with the loss functions and now ठीक है। so सबसे पहले तो ये क्वेश्चन रहेगा, did you understand what we have done over here, ठीक है, because that is pretty important। आपको समझ में आना चाहिए जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो बस दो बच्चों को समझ में आ रहा है, बाकी कहाँ हैं? ओके, सो प्लीज़ राइट योर नेम्स ऑन द स्ट्रीम फॉर द अटेंडेंस, ठीक है। मैं अटेंडेंस नहीं लेता हूँ, दैट इज़ वाई
most of the students don't attend the classes. Okay, so now let's try to understand the optimizers. ठीक है, so हम लोगों ने इतना कवर कर लिया है. Okay, so please understand, Akash, we are moving in a step-wise fashion. ठीक है, हम लोग ऐसे मूव नहीं कर रहे कि हम डायरेक्टली आपके साउंड डेटा पहुंच जाएंगे. सो वी हैव टू एक्चुअली काइंड ऑफ मूव इन स्टेप वाइज काइंड ऑफ थिंग. क्योंकि अगर आपको मैं एक साथ बता दूं कि हाँ हम लोग ऐसे, ये आपका कोड लिखा हुआ है, ये हम लोग ऐसे इसमें डीप लर्निंग लगा के रिकॉग्नाइज कर लेंगे वॉइसेस को, देन दैट विल नॉट बी पॉसिबल. यू विल हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड उसके बैकएंड पे क्या चल रहा है. देख, आई कैन नॉट जस्ट गिव यू एवरीथिंग साइमल्टेनियसली. ठीक है, ओके. So now the next topic, that would be optimizers. So as you all know कि optimizers क्या होते हैं. Optimizers are for your neural network to update. ठीक है, so you can always find all the optimizers over here. If you go to the optimizers page, and everything will be given to you. ठीक है, so the mostly used optimizers are your ADA grade, Adam. I think ADAMX is not used that. ठीक है, but let's take it. ADA grade is like mostly used in, like it is most efficient I think, but let's see. ठीक है, so SGD is pretty important, RMS prop is pretty important, NADM is pretty important. Then we have ADA grade. ADA grade is actually adaptive gradient, and ADAMX, I don't actually remember what is ADAMX. It could be adaptive momentum or something like that, but we'll see. Okay, so we have already seen this SGD. So if you go to the documentation of it, then you will actually see कि ये करता क्या है. ठीक है, so it actually says कि आप learning rate define कर दो, momentum define कर दो. ठीक है, so when you use momentum with SGD, so it is actually called gradient descent with momentum. ठीक है, okay, so as you can see, stochastic gradient descent and momentum optimizer computes theta t plus 1 equals theta t minus learning rate. ठीक है, माइनस y माइनस. ठीक है, अब मुझे कौन बताएगा कि ये माइनस हम लोग क्यों कर रहे हैं यहाँ पे. कौन बताएगा मुझे यहाँ पर माइनस क्यों हो रहा है. No, Achint, if you see it properly, so theta is actually your weights. Theta is your weight. ये weights हैं आपके. theta t plus 1 ये सब weights हैं आपके. ठीक है, these are not your normal loss. It is your weight. No आकाश, that is not the reason. Think about it. हम लोगों ने इसे बहुत पहले किया है, बहुत पहले किया है. Yes, Kirti, it is for upgrading your weights, but why minus sign? यहाँ पर minus sign क्यों है? Yes, it is trying to find the minimum point.
बट मिनिमम पॉइंट ऑफ वॉट, ठीक है, दैट यू विल हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड। यू आर एक्चुअली मिनिमाइजिंग योर कॉस्ट या फिर लॉस आप मिनिमाइज कर रहे हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आप हमेशा माइनस करोगे वेट्स में तो आपका लॉस मिनिमाइज होता चला जाएगा। No, you are close, Achint. You are very close, but you are not kind of reaching to the spot that I want. Okay, so let me actually give it to you why we are actually doing minus over here. So let's go ahead with okay. So मैंने आपको बहुत पहले बताया था, यू हैव कपल ऑफ लाइन्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लेट्स मेक सम लाइन्स, ठीक है। सो ओवर हियर दिस इज योर कॉस्ट, कॉस्ट या फिर लॉस कह लो, ऐसे कुछ भी कह लो, ठीक, कॉस्ट या लॉस। एंड देन दिस इज योर वेट्स, वेट्स यहाँ पर आपके वेट्स हैं। ये सिंगल डायमेंशन में लेके चल रहा हूँ मैं अभी फॉर सिंपलिसिटी, ठीक है। Now your function will look something like this, ठीक है, it will look something like this, ठीक है, say it looks something like this, ठीक है। Okay, so now मैंने आपको एक और बात बताई थी, से यू टेक ग्रेडियंट ओवर हियर, ठीक है, यू टेक ग्रेडियंट ओवर हियर। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया, योर डी ओवर डी डब्ल्यू आई जे कुछ भी हो गया ये लॉस, ठीक है। सो ग्रेडियंट एक्चुअली गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम चेंज, ठीक है। तो मैक्सिमम चेंज किस डायरेक्शन में होगा, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट। एंड फॉर मिनिमाइजिंग योर लॉस, ठीक है, फॉर मिनिमाइजिंग योर लॉस और योर कॉस्ट, सो व्हाट यू विल एक्चुअली रिक्वायर इज यू विल रिक्वायर टू मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट ऑफ द ग्रेडियंट। तो जो आपका ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट इज एक्चुअली पॉइंटिंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमाइजिंग द लॉस, ठीक है। तो आपका जो ग्रेडियंट की डायरेक्शन है वो लॉस को मैक्सिमाइज करने की डायरेक्शन में है, ऑलराइट। बट यू वांट टू मिनिमाइज इट, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर आप नेगेटिव डायरेक्शन में चलोगे, जहाँ लॉस जा रहा है उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। दैट इज वाई वी आर यूजिंग अ नेगेटिव साइन ओवर हियर, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, लाइक व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। Yes, so that is why it is negative. Okay, so now let's move forward. Okay, so there is couple of kind of, यहाँ पर इन लोगों ने calculations नहीं दी because the calculations that deal with stochastic gradient descent are pretty complex. Like when I studied neural network in 2017, तब हम लोगों ने इन्हें सॉल्व किया था, लाइक इट वाज प्रेटी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ता, लेट मी एक्चुअली टेल यू हम लोग क्या करते थे। तो say you have, okay, so want a background like this, let's erase everything. say you have a neural network, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बैक प्रोपगेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो बैक प्रोपगेशन में क्या होता है, यू ऑलरेडी नो, ठीक है। से एक और बना लेते हैं। so these will be connected something like this, not the best drawing but you will get the idea, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, okay, पहले मैं बना लेता हूँ इसे। okay,
तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, पहले पहले फॉरवर्ड पास होता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड पास इज फर्स्ट, फॉरवर्ड पास में यू विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। So in forward pass, what you will get over here will be some y value, y predicted value, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता था, फिर हम लोग क्या करते थे, बैकवर्ड पास करते थे। तो बैकवर्ड पास, लेट्स टेक डिफरेंट कलर। तो बैकवर्ड पास में से हम लोग यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ये हो रहा था कि यहाँ के जितने भी सारे न्यूरॉन्स हैं, ऑल दीज न्यूरॉन्स, ठीक है, एक इस वाले न्यूरॉन पे अपना एक्टिवेशन इकट्ठा कर रहे थे, ठीक है। जो भी आपका सिग्नल है, तो यहाँ पर सारा एक्टिवेशन इकट्ठा होता था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सारा एक्टिवेशन इकट्ठा हो रहा है, राइट। बट जब हम लोग बैक प्रोपगेशन करते हैं, तो बैक प्रोपगेशन में क्या हो गया, बैक प्रोपगेशन में अब आप उल्टे चल रहे हो, सो यू आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो ये 3 न्यूरॉन्स हैं, इनका एक्टिवेशन अब इन इंडिविजुअल सब पर इकट्ठा होगा, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। एंड फॉर दिस देन वी कैलकुलेट दिस, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, y प्रेडिक्टेड है, तो आपका dy, सॉरी y माइनस, एक्चुअली y ट्रू माइनस y प्रेडिक्टेड, यही इतना नहीं होता, बट यू एक्चुअली डू इट विद द लॉस फंक्शन एज वेल। तो यहाँ पर आपको लॉस फंक्शन भी लगाना पड़ेगा इनके साथ, ठीक है। सो आई विल एक्चुअली राइट इट लाइक डी एफ समथिंग विच इज़ द लॉस फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से अब आपका लॉस यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इन सारे न्यूरॉन्स पे लॉस इकट्ठा होगा, ठीक है। इनका सिग्नल कुछ निकल के आएगा, एंड देन ये आपका क्या आ जाएगा, एरर यहाँ पर दोबारा से आएगी, यहाँ से इन सब में एक एक के पास जाएगा, एक के पास, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, जो भी ग्रेडियंट वगैरह इकट्ठा हो रहा है। एंड बेस्ड ऑन दैट आपका क्या होगा, यहाँ पर जो वेट्स हैं, ये वेट्स अपडेट होंगे। जो फार्मूला आपका दे रखा है यहाँ पे, थीटा t+1 इक्वल्स थीटा माइनस योर लर्निंग रेट LR टाइम्स योर ग्रेडियंट ऐसे करके, ठीक है। सो जैसे जैसे आप पीछे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं। लाइक ओवर हेयर, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिग्मा आपका क्या हो रहा है, इन 3 के साथ हो रहा है, एंड देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन 6 के साथ सिग्मा होगा। सो यू एक्चुअली गेट 2 सिग्मा साइंस ओवर हेयर। यहाँ पर आपको 2 सिग्मा साइंस मिल जाएंगे। सिग्मा का मतलब समेशन, यहाँ पर जो सम हो रहा है ना, दैट विल एक्चुअली काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेट थिंग्स। तो ये हम लोगों ने मैनुअली किया था इन 2017। इट वाज लाइक आई वाज लाइक, हाँ ठीक है, मैं याद नहीं करना चाहता, इट वाज प्रीटी हार्ड, बट इवेंचुअली वी वर एबल टू डू दैट, ठीक है। ओके, सो यस, सो इट शुड समराइज योर ग्रेडियंट डिसेंट। सो दिस इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग टू सी कि आप कैसे ग्रेडियंट डिसेंट को आप न्यूरॉन में इस्तेमाल करते हैं, एंड वेट्स आर अपडेटेड, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपने जैसा देखा होगा, इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। सो स्टोकेस्टिक का मतलब ये है कि आप रेंडमली अपने सैम्पल्स चूज़ करते हो फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रेडियंट, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट ग्रेडियंट यू एक्चुअली अपडेट द वेट्स, ठीक है। सो यस, सो दैट्स ऑल अबाउट योर स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। अब इसमें हम लोग कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, बिकॉज वी कैन नॉट एक्चुअली यूज़ इट स्टैंडर्ड लोन। जैसे हम लोगों ने अपने लॉस फंक्शन वगैरह को इस्तेमाल किया था, वैसे हम लोग इसे नहीं कर सकते। बट यहाँ पर आपको रीडिंग मटेरियल वगैरह ज़रूर मिल जाएगा, इफ़ यू वांट टू चेक दैट आउट, ठीक है। यहाँ पर यू कैन एक्चुअली सी, यहाँ पर जो भी पेपर में दिस एल्गोरिथम वाज काइंड ऑफ इन्वेंटेड, तो वो आप देख सकते हो।
ठीक है. So now let's see what other optimizers have for us. So the next will be RMS prop, I think. Yes. So RMS prop mein we have the same thing, but RMS prop is pretty kind of little forward from your SGD. SGD is थोड़ा सा एडवांस रहता है ये RMS prop. We'll actually see if time requires or that time permits कि कैसे आप इन ऑप्टिमाइजर से वेट अपडेट करते हो और क्या इनके बेनिफिट्स होते हैं और क्या लिमिटेशंस होती हैं. वील एक्चुअली सी. ठीक है. तो यहाँ पर यू कैन एक्चुअली सी कैसे आपकी कैलकुलेशंस होती हैं. ठीक है. ओके. सो दे हैवंट एक्चुअली शोन अस द वेट अपडेट इक्वेशन. आई थिंक यहाँ पर वेट अपडेट की इक्वेशन नहीं है, बट दे आर जस्ट कैलकुलेटिंग मीन स्क्वायर टी एंड मोमेंटम, आई थिंक. ठीक है. ओके. सो वी कैन नॉट एक्चुअली यूज दैम स्टैंड अलोन, दैट इज बैड. ठीक है. सो यहाँ पर इफ़ यू काइंड ऑफ वांट टू नो कि ये रो क्या है, दिस एप्सिलॉन क्या है, ठीक है, देन यू कैन एक्चुअली कम ओवर हियर इन दिस आर्क्स. तो यहाँ पर रो इज़ योर डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर योर हिस्ट्री कमिंग ग्रेडियंट्स. सो दिस इज़ नथिंग बट योर एक्यूमुलेशन ऑफ योर ग्रेडियंट्स. एंड देन मोमेंटम इज़ योर स्केलर टेंसर. एंड मोमेंटम का मतलब क्या होता है? इट काइंड ऑफ रिमेंबर्स द पास्ट ग्रेडियंट्स जो पहले अपडेट्स में इस्तेमाल किए गए हैं. एंड दैट काइंड ऑफ हेल्प्स फॉर कमिंग आउट ऑफ अ लोकल मिनिमा. अगर आप लोकल मिनिमा में फंस गए हैं देन वहाँ से अब वापस या बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है SGD में. बट बाय यूजिंग SGD विद मोमेंटम और RMS prop you can actually get out of that problem. ठीक है. एंड यू कैन एक्चुअली चेक दैट आउट कि यहाँ पर और कौन से ऑप्टिमाइजर्स अवेलेबल. बट आई डोंट थिंक वी हैव टू गो डीपर इन दैम. ठीक है. एंड आई थिंक दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास. अब हम अगली क्लास से क्या करेंगे? अगली क्लास से हम प्रॉब्लम्स को उठाना स्टार्ट करेंगे. एंड कुछ क्लासेस के बाद हम लोगों को कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क भी पढ़ना है, CNN भी पढ़ना है. ठीक है. सो CNN आर एक्चुअली यूज्ड फॉर इमेज डेटा. ठीक है. सो इमेज डेटा को कैसे हम प्रोसेस कर सकते हैं विद अ फास्टर न्यूरल नेटवर्क एंड मच हायर एक्यूरेसी, वो हम लोग देखेंगे अपनी CNN में. ठीक है. सो वो भी हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं. राइट. सो यस. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास आई थिंक. ठीक है. हम लोग ऑप्टिमाइजर्स में खैर ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बट you don't have to actually understand everything in detail of the optimizers. Just understand that we kind of update our weights with the help of optimizers. और optimizers कैसे weight को update करते हैं, you can actually check that out from the source code. और अगर आप ये जानना चाहते हो source code कैसे check करते हैं, then you can actually tell me, I'll actually show you. ठीक है. and one more thing, जब आप लोग DHA submit करते हैं और आप पहले करते हैं DHA, and if you have any question or doubt about कि क्या करना है, then you can please ask me before doing in a idiotic way. ठीक है. otherwise जब आप DHA सबमिट कर देते हो then I kind of get confused और मुझे 5-6 मिनट ये समझ में नहीं आता आप लोगों ने किया क्या है. ठीक है. या मुझे ही लगता है मैंने ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया. ऑलराइट. सो प्लीज़ आस्क मी. ठीक है. before doing your DHA if you have any confusion. Okay. Alright, so if you don't have any question for today's class, then we can actually finish over here. Okay, so no questions. Okay, so we'll actually finish over here and let's see what we can do by the next class. Okay, so thanks for joining me on this stream.
and I'll see you in the next one.